This is me, Akash Mishra, presenting this session in which we are going to learn about matter in our surroundings. Let's begin it. In this session, we are going to take an introduction of matter, characteristics of particles, classification of matter, states of matter, change of state of matter from one part to another, effects of temperature on matter, effects of pressure on matter, and evaporation. So, what is matter? Anything which occupies space and have mass in our surrounding is known as matter. दो चीजों के बारे में हमने बात किया, पहला स्पेस और दूसरा मास. If any object, any substance around us having these two property will known as matter or will be identified as matter. Okay, मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे आसपास कुछ भी जगह घेरेगा, स्पेस लेगा और उसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, तो उसे हम लोग मैटर कह देंगे. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. उसी से मिलके हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, आसपास जितने भी टेबल चेयर कुर्सी, सब सारी चीजें हमारे आसपास मैटर से बनी होती हैं, ठीक है. इन्हीं मैटर से मिलके सारे सब्सटेंसेस हमारे आसपास बने होते हैं, ठीक है. अब वो ये सब सब्सटेंसेस भी क्या करते हैं, स्पेस लेते हैं कुछ ना कुछ हमारे आसपास, ठीक है, और उनका कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स? फर्स्ट पॉइंट, they are continuously moving. Every particle in our surrounding are in a continuous motion, हमेशा, whether be it the particle of solids, be it the particle of liquids, be it the particle of gases, we can feel the movement of particles of gases and liquids, but there is a movement of particles of solids too. They having space between them, मतलब जितने भी particles से कोई भी सब्सटेंस बना है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सारे पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहता है जिसकी वजह से वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं. सॉलिड्स की बात करें तो वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेशंस करते रहते हैं, लिक्विड्स की बात करें तो थोड़ा सा जगह ज़्यादा रहता है और वो मूव कर पाते हैं अच्छे से. गैसेस में द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर हायर दैन both liquid and solids. Understood? Now, third point, they attract each other. Every particle attracts every another particle in its surrounding. Therefore, they have they have a force between them which is known as interparticle or intermolecular force. Now, for example, air we breathe is matter, food we eat is matter, drop of water is matter, planet and stars are matter, notebooks and pen, clouds, particles of sands, plants and animals, everything around us or which we have seen on the screen occupies space, occupies some space around us and also have mass. Therefore, these all things are known as matter. Understood? Now, characteristics of matter. First point, particles of matter are continuously moving. Why they are moving? Because every particle possesses a kinetic energy which helps them to move from one point to another. As temperature rise, particle moves faster because kinetic energy increases. Understood? Every particles around us, when we provide some temperature, which is also a form of energy, will convert to the kinetic energy of the particles.
and will help them to move faster. Understood? Which means अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसकी? पार्टिकल्स की। और पार्टिकल्स ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा तेजी से मूव कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस में पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी होती है। सॉलिड्स में बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि पैक्ड रहता है, स्पेस बहुत कम रहता है, सिर्फ वाइब्रेशन कर पाते हैं। लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा, सॉलिड से ज़्यादा रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैसेस में। गैसेस में बहुत ज़्यादा रहता है, मैक्सिमम रहता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है, जिसकी वजह से वो इधर से उधर, उधर से इधर भाग सकते हैं। समझ में आया? अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या बोलता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम is known as matter. The space between the particles is not fixed. समझ में आया? यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, ठीक है, तभी तो वो मूवमेंट कर पा रहे हैं। अब सॉलिड्स की बात करेंगे तो वहां पे स्पेस बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस ही कर पाते हैं, ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। और वहीं पे बात करेंगे लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रहता है, तो मूव कर पाते हैं, लिक्विड फ्लो कर पाता है। और वहीं पे बात करेंगे हम अगर गैसेस की, कुछ देर पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि गैसेस के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लोग मूव कर पाते हैं बहुत तेजी से। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। उनके बीच में क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है गैसेस के पार्टिकल्स को एकदम पास पास चिपक के बैठना चाहिए। बिल्कुल, आपका से कहना सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनके बीच में स्पेस ही इतना ज़्यादा रहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके ऊपर काम ही नहीं करता, जिसकी वजह से because of which the particles are the particles feel less force of attraction in gaseous state. And talking about solids and liquids, solids में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड्स में, जिसकी वजह से सारे के सारे पार्टिकल्स पैक्ड रहते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट लिक्विड्स, द force of attraction between the particles of a liquid is intermediate between force of attraction of solids and force of attraction of gases. Now, classification of matter. Talking about classification of matter, uh, the matter can be classified on the basis of physical and chemical properties. If we talk about physical properties, solids, liquids, gases, plasma, and Bose-Einstein condensate are some of the example, some of the things on which we can classify matter on the basis of physical classification. And when we talk about chemical classification, then pure substances, mixtures, and also pure substances can be classified as elements and compounds, and mixture can be classified into homo homogeneous and heterogeneous mixtures. Understood? Now, states of matter. What are the states of matter? There are three states of matter: solids, liquids, and gases. Solids have definite shape, which we can see around us. Liquids have no definite shape, and gases also have no definite shape because force of attraction. Force of attraction, as we have studied before, so force of attraction force of attraction between the particles of a solid are high. Therefore, they are very closely packed and will have definite shape. And talking about liquid and gases, the force of attraction between the particles of liquid and gases are very less. Therefore, they do not have a definite shape. Understood? Solids have a distinct boundaries.
as discussed before, force of attraction is the main cause of it, and liquids and gases do not have distinct or definite boundaries. Solids are rigid, liquids are liquids and gases are fluid. They show fluidity. Understood? Solids cannot be in compressible. They are incompressible in nature because they do not have any space between them. The particles of a solid do not have space between them, due to which they are not incompressible. But talking about liquid and gases, so liquids have some space between the particles, therefore they are less compressible, and gases have high space between the particles, therefore they are compressible, and the particles of gases would come very close after compressing. Solids have definite volume, liquids have definite volume, but gas do not have definite volume. What does that mean? This means that solids have a definite volume. If we talk about any cube, its volume is fixed. Understood? And talking about liquid, if you pour a glass of water into a jug, that glass of water is same. And if we pour that glass of water from jug to a katori, then the amount would be same. But if we burst a balloon, then the gas under in the balloon would spread into the whole room and take the volume of the whole room. So this proves that gas do not have definite volume. Understood? Now, by changing temperature and by changing pressure, we can change solids into gases, solid into liquid, solid into and liquid into gas, liquid into solid, gas into liquid, gas into solid. Let's discuss about it. By changing temperature, if we change temperature, the solid would turn to liquid and liquid would turn to gases. As we discussed before, that the particles of solid would get kinetic energy after providing it temperature temperature after providing it heat. It will The particles of the solid will get kinetic energy and start flow. And if it increase temperature of a liquid, then it will also get kinetic energy and convert into gases form. The temperature at which a solid melts to form liquid at atmospheric pressure is called its melting point. What is melting point? The temperature at which a solid melts is known as melting point. Understood? Now, the amount of heat required to change 1 kg solid to liquid is known as latent heat of fusion. Understood? The amount of heat which is required to change 1 kg of sol solid to liquid is known as latent heat of fusion. Now, boiling point. What is boiling point? If we provide heat to a liquid, then it will start vaporizing, and the temperature at which our liquid boils to form vapors at atmospheric pressure, it is known as boiling point. Understood? Now, now the amount of heat required to change 1 kg of liquid to gases, that amount of liquid is known as that amount of heat is known as latent heat of vaporization. Understood? Now,
चेंजिंग टेम्परेचर, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? अगर कोई भी सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाए आफ्टर चेंजिंग दी टेम्परेचर, दिस process is known as sublimation. The change of solid directly to vapor on heating, and vapor in changes and into solid on cooling without passing through the liquid state is known as sublimation. Which means अगर हम लोग किसी भी सॉलिड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में, डायरेक्टली वेपर, इज नोन एज sublimation. For example, camphor in our houses, when we burn it, it will change into vapor. Understood? And ammonium chloride also shows that property. Effect of change of pressure. Now, if we compress a gas in a cylinder, the distance between the particles of gas is reduced and finally gas is liquefied. Understood? The अब यहाँ पे देखो, एक पिस्टन से सिलेंडर में भरे हुए गैस को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो कम होता चला जा रहा है। जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो वो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन है एलपीजी एंड सीएनजी में। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल को, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, गैस को हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करके लिक्विफाई कर देते हैं, और उसका यूज़ हम लोग अपने घरों में करते हैं। ठीक है, और सीएनजी में भी वही चीज़ होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो। समझ गया? दैट्स द थिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।